Good evening to everyone. I am a security guard by profession from Central Africa, Cameroon. I have been leading people to go to the washroom and to go to the prayer room also. And then this little boy, he came and I lead him to washroom, and he now said he wants to discuss something with me. When I opened up to him, he tried to convince me to become a Muslim. That is good for me. And I asked him, why do you think it's good for me? He said that I should try it, I will never regret. And I told him I have listened to the speakers. I'm highly convinced that Islam is the best religion. So I want to become a Muslim. MashaAllah. The brother was asked by a young Muslim, and that gives an example, MashaAllah, that age is never a barrier. And I know that more than 50% of you may not have spoken to a non-Muslim, and this young boy, I think his age may be 6 years, 7 years? 12 years, MashaAllah. 12 years, not even in his teens, has convinced our brother here, MashaAllah, from Cameroon. Brother, are you accepting Islam out of your free will? Do you want to accept Islam out of your free will? Yes, sir. Is anyone forcing you? No one is forcing me, sir. MashaAllah. It's out of your free will. Do you believe that there is one God? Yes, there's only one God, sir. Do you believe that Prophet Muhammad is the last and final messenger? Yes. Inshallah. So I'll just say in Arabic and you can repeat that, inshallah. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasul. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and and Prophet Muhammad Prophet Muhammad is is his messenger and servant. his messenger And servant. and servant. MashaAllah. MashaAllah. You're a Muslim, MashaAllah. May Allah reward you. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He guide you. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may He grant you Jannah. And I pray also that may that youngster, MashaAllah. And I request the brothers that whenever you meet a new Muslim, be kind to him, be patient with him, and whatever help they require, inshallah. And there are many organizations here in Dubai. If you require any information regarding Islam, you're most welcome to contact them. Jazakallah, brother. तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख ली और हमारे लिए तो इंतहाई शर्म का मकाम है कि एक 12 साल बच्चा जो कि बालिग भी नहीं है उसकी वजह से एक इंसान ने इस्लाम कबूल कर लिया और एक इंसान अबदन अबदन और जहन्नम से बचकर जन्नत में दाखिल होने के लिए उसने अपना जो है वो रास्ता बदला है। अब आप ये ख़ुद सोचें कि वीडियो कितने लोगों ने देखी होगी और कितने लोगों ने इस्लाम पर जो है वो तहकीक करना शुरू किया होगा, कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया होगा। इंटरनेट पर तो किसी को मालूम नहीं पड़ता कि कौन कहाँ से वीडियो देख रहा है। तो उन सब जितने भी लोग इस्लाम कबूल करते हैं उन सब में इस छोटे से बच्चे की जो है अल्लाह बराबर का हिस्सा देगा। अल्लाह इस बच्चे को जो भी अजर व सवाब होगा। और ये बच्चा जो कि बाज़ार लग रहा है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जैसे उलमाओं की से जो है वो मुतासिर हुआ है, तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का आप कहते हैं कि एक शागिर्द भी है। तो इस छोटे बच्चे की एक मामूली सी कोशिश में अल्लाह ने इतनी खैर और बरकत डाली कि एक मुकम्मल इंसान ने जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया। आप ख़ुद सोच लें कि हमारे यहाँ उलमा है, सारा दिन आपस में लड़ते झगड़ते हैं और मैं कभी कभी हैरान रह जाता हूँ कि अल्लाह ताला ने अब ये दीन का काम किसी बाकी और लोगों से लेना शुरू कर दिया और हम सिर्फ़ और सिर्फ मुनाजरों के लिए रह गए हैं या फिर इस्लाम को अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि भारत के ख़िलाफ़ अगर कोई लड़ाई हो तो वहाँ पर इस्लाम ले आते हैं या
کسی اور ملک کے ساتھ ہماری نہیں لگتی تو وہاں پر لے آتے ہیں، ورنہ تو چائنا میں جتنا ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے کہیں پر بھی نہیں ہو رہا، لیکن ان کے خلاف ہم نے ایک بات بھی نہیں کی۔ تو اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے جب ہمارے معاشرے میں استعمال ہو رہا ہے، ہم سب استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ نے اس دین کی سربراہی اور اس کی دعوت اور تبلیغ کا کام یہ جو ہے انگریزوں سے یا مطلب کہ باقی ممالک کے لوگوں سے لینا شروع کر دیا۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ کی اس دین کی دعوت اور تبلیغ میں اللہ ہمارا بھی حصہ ڈالے، اور اللہ کرے کہ ان ویڈیو سے لوگوں کی اصلاح ہو۔ آپ سے بھی اپیل ہے کہ فضول میں زیادہ تر سوشل میڈیا پر پولیٹکس وغیرہ کی ویڈیوز دیکھتے تو ان طرح کی ویڈیوز کو بھی کوشش کرے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کرے، آپ کو بھی اللہ اس میں برابر کا اجر دے گا۔ باقی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کوئی رائے ہو تو وہ بھی آپ اپنی قیمتی رائے مجھے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔ والسلام۔